Now we will start the pins in a minimum mode. The first pin in minimum mode is INTA bar, pin number 24. It is an interrupt acknowledge pin. Whenever an interrupt signal is generated, the microprocessor generates the INTA signal as a response to that interrupt. Okay. Whenever interrupt signal is generated, the microprocessor generates the interrupt signal as a response to that interrupt. Next is your ALE, pin number 25. ALE is an abbreviation for the address latch enable. Whenever an address is present in the multiplex address and data bus, then the microprocessor enable this pin. जब भी एड्रेस और एड्रेस प्रेजेंट रहेगा एड्रेस और डेटा बस तभी आपका ये अनेबल होगा पिन. ओके, दिस इज डन टू इन्फॉर्म द पेरिफेरल्स एंड मेमोरी डिवाइस about fetching of the data or instruction at that memory location. Fetching means you are taking the data from the user. These are pins in minimum port. The next pins are DEN bar, pin number 26. DEN is used for data enable. This is an active low pin. That means whenever a 0 is present at this pin, then the transceiver gets enabled and it separates the data from the multiplex address and data bits. Then next is your DTR bar. What is a DEN? Data enable. This is an active low pin. That means whenever a 0 is present at this pin, then the transceiver gets enabled and it separates the data from. जब भी आपका 0 रहेगा तभी आपका ये पिन एक्टिव हो जाएगा. इट गेट्स अनेबल और वो सेपरेट करेगा डेटा फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस. नेक्स्ट इज योर DTR बार, पिन नंबर 27. दिस पिन इज यूज टू शो वेदर द डेटा इज गेटिंग ट्रांसमिटेड और इज रिसीव. मतलब वो शो करेगा आपका डेटा सेंड हो रहा है या रिसीव्ड हो रहा है. A high signal at this pin provide the information regarding the transmission of a data, while a low indicates the reception of a data. हाई सिग्नल जब भी रहेगा आप डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, सेंड करेंगे, और लो रहेगा जब भी आप लोग रिसीव करेंगे. ओके, दैट इज DTR बार. MIO bar means pin number 28. This pin indicates whether the processor is performing an operation with memory or input-output devices. Whenever a high is present at the pin, then it shows the operation is carried out through the memory. Wherever the signal is low, it shows the operation input-output devices. Okay. Den मतलब क्या, जब भी आपका जो पिन है उसका वैल्यू अगर 0 रहेगा तो वो पिन अनेबल्ड होगा और वो सेपरेट होगा डेटा और एड्रेस बस में से. डेटा को डिफरेंट करेगा. देन DTR बार में क्या होगा, वो शो करेगा कि आपका डेटा सेंड हो रहा है या रिसीव्ड हो रहा है. अगर सिग्नल हाई रहेगा तो सेंड हो रहा है और लो रहेगा तो रिसीव्ड हो रहा है. और MIO बार में ये इंडिकेट करता है कि वो मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या इनपुट आउट पे. अगर डेटा हाई होगा देन इट शोज द मेमोरी कैरिड आउट सम ऑपरेशन, और अगर लो रहेगा द ऑपरेशन थ्रू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ओके, द नेक्स्ट इज योर WR बार, राइटिंग द ऑपरेशन. An active pin number 29, an active low signal at this pin indicates that the processor is performing the write operation from either memory or input-output devices. Then hold, pin number 31. When an external device enables this pin, then the processor stops the accessing the bus immediately after the recent task gets over. Hold क्यों, मतलब अगर आप लोग ने एक इंस्ट्रक्शन भेजा तो दूसरा इंस्ट्रक्शन आपका तब तक होल्ड में रहेगा जब तक आपका ये इंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होगा तब तक. और अगर खत्म भी हो रहा है और आपको वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भेजना नहीं है तो यू कैन यूज द होल्ड. दैट इज अ पिन नंबर 31. HRDA, pin number 30. This pin is used as a response pin for the hold request. Once request for the accessing the buses is produced by an external entity, then the microprocessor acknowledge the device that its request will be considered once it gets over by the current operation. Okay, उसे कहेंगे HRDA. HRDA मतलब होल्ड रिक्वेस्ट. जब तक होल्ड रिक्वेस्ट भेजा नहीं जाएगा आपका नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा. जब वो भेजा जाएगा माइक्रोप्रोसेसर के पास तो it will be gets over the current operation and we will start with the next instruction, next operation. अब हो गई ये आपके pins in minimum mode. Next is your pins in maximum mode. S0 bar, S1 bar and S2 bar, pin number 26 to 28. These are basically 3 status pins and are active low. This means that if the status at all the 3 pins is 0, then it shows the multiple interrupt or to be handled in a maximum mode.
So these are the some different processes or the different combination in a status signal. अगर तीनों भी जीरो रहेंगे तो इंटरप्ट आएगा, लो रहेंगे तो अगर S0 S1 0 है और S2 1 है तो रीड ऑपरेशन होगा, रीड करेगा इनपुट आउटपुट को. अगर S0 0 है और S1 S2 1 0 है तो वो राइट करेगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को. अगर S0 0 है और S1 S2 आपके 1 1 है तो वो हॉल्ट ऑपरेशन में जाएगा. अगर S0 और S0 1 है और S1 S2 0 0 है तो वो राइट करेगा मेमोरी के अंदर. अगर S0 1 है और S1 1 है और S2 0 है तो वो राइट करेगा. अगर S1 0 0 है वो तो रीड करेगा और अगर 1 1 0 है तो वो राइट करेगा इन द मेमोरी. आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस राइट करेगा और एम का मतलब है मेमोरी. And if there is a 1 1 1 there is a none. So these are the some need status combination for the pins S0 S1 and S2 bar. Next is your QS0 and QS1. Pin number 24 and 25. These two pins are indicate the status of the 6-byte prefetch queue present in the architecture of 8086. जो आपके आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर आपका बाद में आएगा, 6 बिट का जो भी क्यू है उसके लिए आपके क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो बताए गए हैं. S0 बार, S1 बार और S2 बार के लिए 26 to 28 है. उसके बाद QS0 एंड QS1 के लिए पिन नंबर 24 एंड 25 है. ओके, सो वो क्या करेगा, 6 बाइट का जो क्यू है आपका, जो 6 बाइट रिप्रेजेंट कर रहा है वो, उसके लिए आप लोग को QS0 QS1 लगेगा. QS0 QS1 status: if 0 0 then there is a no operation, if 0 1 then it is a first byte from queue, if a 1 0 then it is a empty queue, and if it is a 1 1 then a subsequent byte from queue. You can see this: 0 0 then no operation, 0 1 then the first byte from queue, 1 0 means empty queue, and 1 1 means subsequent byte. Next pin is your lock, pin number 29. This pin is involved in maximum mode operation. So basically, when a single processor is accessing the buses and peripherals, then it locks the resources being used by it so that no other entity can access it until the recent processor frees it. Okay, मतलब अगर वो सिंगल प्रोसेसर एक्सेस होगा तो सारे बसेस और पेरिफेरल लॉक हो जाएंगे जब तक आपका नेक्स्ट प्रोसेसर और एंटिटी नहीं आता, तब तक वो फ्रीज रहेगा. RQ बार GT0 बार and RQ bar GT1 bar, pin number 30 and 31. Due to the involvement of a multiple processor, this pin indicate the request and grant permission for accessing the buses, memory and peripheral. मतलब request और grant कब करना है, उसका जो permission है that will be depend upon the this pin number 30 and 31, RQ bar and GT0. So due to the involvement of a multiple processor, these pins indicate the request and grant permission for accessing the buses, memory and peripheral. So this is the total 40 pins, and this is all about the pin diagram and description of the 8086 microprocessor. So this is the question is really very important, that is always asked in MSBT for the 4 or a 6 marks. So you have to by heart or read the question and answer properly. नेक्स्ट इज योर मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड ऑपरेशन. हम लोग ने प्रीवियस में मिनिमम मोड में कौन कौन से पिन्स है और मैक्सिमम मोड में कौन कौन से पिन्स है वो देखा. अब एक्चुअल मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड का जो ऑपरेशन है वी विल सी दैट. व्हाट इज द मिनिमम मोड सिस्टम? The minimum mode system, the microprocessor 8086 is operated in a two modes, that is a minimum mode and maximum mode. Okay. In this mode, all the control signals are given out by the microprocessor chip itself. There is a single microprocessor in the minimum mode system. The remaining components in the system are latches, transceiver, clock generator, memory, and input-output devices. Latches are generally buffered output D-type flip-flop like 74LS373 or 822. They are used for separating the valid address from the multiplex address and data signal, and are controlled by the ALE signal generated by 8086. Now we will see the minimum mode diagram. So what is the general bus operation? First, the 8086 has a combined address and data bus, commonly referred as a time multiplex address and data bus.
The main reason behind the multiplexing address and data over the same pins is the maximum utilization of a processor pins, and it facilitated the use of 40-pin standard DIP package. The bus can be demultiplexed using a few latches and trans receiver whenever required. Basically, all the processor bus cycle consist of at least 4 cycle. कौन कौन से 4 cycle consist करते हैं? T1, T2, T3 and T4. The address is transmitted by the processor during T1. Present on the bus cycle, the negative edge of the ALE pulse is used to separate the address and data or status information. In maximum mode, the status line S0, S1 and S2 are used to indicate the type of operation. So these are the diagram for the minimum mode. That is not necessary to remember or understand. This is only for understanding purpose. There is a reset, ready, reset. All the clocks are attached to that. So these are the basic logical diagram, and we can see the circuit block diagram for the minimum mode. Next, you can see that the write cycle. So what is the dip? Here is the status byte S3 and S7 are multiplexed with the higher order address bit, that is a BHE signal. Address is varying during a T1. Address valid कब तक रहेगा? Next T1 तक रहेगा status bit. So S3 to S7 are valid during T2. T2 देखो T2 से आपका हो रहा है जहाँ तक T1 खत्म हो रहा है, और T1 2 में आपका बस हाई अनेबल है. A minimum mode system. In this mode, all the control signal are given out by the microprocessor chip itself. There is a single microprocessor in the minimum mode system. In a minimum mode 8086 system, the microprocessor 8086 is the operator in a minimum mode by strapping its MN/MX bar. अब यहाँ पे MN/MX bar नहीं है in at a logic 1. The remaining component in the system are latches, transistor. ये हम लोग ने previous में देखा. Okay, the working of the minimum mode configuration can be better described in terms of the timing diagram. अब यहाँ पे timing diagram दिया है आपका, तो अब हम लोग देखेंगे. We can see that the upcode fetch and read cycle are similar, hence the timing diagram can be categorized in two parts. The first timing diagram is for a read cycle and the second one is for the writing cycle. जो first वाला है वो हमारा read cycle के लिए है, तो वो कैसे होगा? The read cycle begins in a T1, the assertion of the address latch enable ALE signal and also MIO bar signal. During the negative going edge of this signal, the valid address is latched on the local bus. Next is your BHE and A0 signal address low, high or both byte from T1 to T4. The MIO signal indicate a memory or input output operation. T2. The address is removed from the local bus and sent to the output. The bus is then transited. The read control signal also activated. मतलब यहाँ पे आपका T2 के यहाँ पे आपका रीड सिग्नल चालू हो जाएगा. फिर the read signal causes the address devices to enable its data bus driver. After RD goes low, the valid data is available on the data bus. फिर होगा आपका the address device is ready line high. तो ready line आपकी high रहेगी. Okay, and the next is your the write cycle also begin with the assertion of ALE and the emission of the address. The MIO signal is again asserted to indicate memory or input output operation. The T2 after sending the address in T1, the processor sends the data to be returned to the address location. The data remains on the bus until middle of T4 state. The WR become activate at the beginning of a T2. The BHE and A0 signal are used to select the proper byte or byte of a memory input output word to be read or write. So these are the MIO, RD and write signal indicate the type of data transfer as specified in the below diagram. ये जो writing cycle यहाँ पे clock है ALE है, तो T1 T2 में ये high है, फिर T1 T2 में BHE high है और S7 S3 T1 नहीं आता तब तक high रहेगा. फिर ये डेटा है तो डेटा T1 T2 में हाई रहेगा. ये राइट बार है, ये DNE बार है और ये है DTR बार. कब तक हाई रहेगा वो दिया है. अब यहाँ पे वो लो रहेगा. T2 से लेके T4 तक ये लो है. DNE बार फिर ये एक्टिव है. अब DTR बार कहाँ से T1 से लेके नेक्स्ट T1 तक वो हाई है.
This is a writing cycle diagram for the minimum mode. Now we will see the next slide in the next video.